Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi. This is the part 1 video of CRUD operations in core data using the repository pattern. जो कोड आज के सेशन में यूज होगा वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अपलोडेड है. And if you need the code, what you can do is check the video description, click on the link and download the code for you. That being said, let's begin our today's session. मोस्टली जब आप डेटाबेस या एपीआई से इंटरेक्ट करते हो, वी आर आइदर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड, रीडिंग अ रिकॉर्ड और मे बी अपडेटिंग और डिलीटिंग अ रिकॉर्ड. We perform these for general operations, and these operations in technical world are called as CRUD operations, which means create, read, update, and delete. These four operations help in data management of your application. Here's a simple example of an employee entity with all the operations. अगर मुझे नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है तब आई विल यूज द क्रिएट ऑपरेशन. अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स फेच करना है या फिर मान लो किसी रिकॉर्ड को किसी कंडीशन के बेसिस पे फेच करना है तो आई विल यूज द रीड ऑपरेशन. फॉर अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड we use the update operation, and for deleting an existing record we use the delete operation. Note how the existing employee record is common for read, update and delete. ये तीन ऑपरेशन करने के लिए आपके स्टोरेज में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए. जब भी हम कोर डेटा या सीक्वेलेट पे कोई भी वीडियो या ब्लॉग रीड करते हैं देन देयर इज वन फेमस कोड विच एवरीवन राइट्स. आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी एंटिटीज हैं उन एंटिटीज के CRUD ऑपरेशन एक ही फाइल में होते हैं. एंड दिस फाइल इज बेसिकली अ सिंगलटन फाइल जिसका नाम डेटाबेस हेल्पर या डेटाबेस एक्सेसर होता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सपोज आपके iOS ऐप में 4 एंटिटीज हैं और उन 4 एंटिटीज के 4 बेसिक CRUD ऑपरेशंस हैं, विच मीन्स पर एंटिटी देयर आर 4 फंक्शन. और ये चारों एंटिटी का कोड आप इस डेटाबेस हेल्पर नाम की फाइल में लिख रहे हो. तो इस फाइल में टोटल फंक्शन कितने हुए? दैट इज 4 into 4 विच इज 16 फंक्शन. दिस प्रैक्टिकली शुड रेज एन अलार्म कि एक फाइल में इतना सारा फंक्शन क्यों है, बिकॉज अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ी और मान लो आपको प्रोजेक्ट में और 6 एंटिटीज ऐड करनी पड़ी तो उस केस में पहले 4 एंटिटीज थी, अब 6 और ऐड कर लिया आपने, तो टोटल एंटिटीज कितनी हुई? दैट इज 4 + 6 विच इज 10 एंटिटीज. एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. और पर एंटिटी भी अगर हमने 4 बेसिक CRUD ऑपरेशन एज्यूम कर लिया तो नाउ इट इज लेट्स डू द मैथ, दैट इज 10 into 4 दैट बिकम्स 40. तो ये डेटाबेस हेल्पर में अगर आप 10 एंटिटीज मैनेज कर रहे हो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज गोइंग टू बी 40. I think now you get the point that this database helper has the potential to grow in size and is not a great design to begin with. One more thing about this code is database helper 10 entities की responsibility handle कर रहा है, which means it is not following single responsibility principle at all. Now some of you जिन्होंने मेरा core data का introduction video देखा है, they may ask, अरे रवि तूने तो पहले पार्ट में persistent storage नाम का singleton फाइल बनाया, तो why are you saying singleton is bad because you are also using it? वेल मैं एग्री करता हूँ, मैंने सिंगलटन क्लास बनाया बट उस क्लास में आई एम जस्ट मेकिंग यूज ऑफ द परसिस्टेंट कंटेनर क्लास. उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है. दैट सिंगलटन जस्ट डील्स विथ वन थिंग, दैट्स ऑल. जस्ट लाइक द नेम सिंगल विच मीन्स जस्ट वन, नॉट मोर देन वन. अब परसिस्टेंट स्टोरेज में मैं अगर 4 अलग क्लासेस को ऐड कर दूं तो उसको अब सिंगलटन नहीं, उसको मेनी टन बोलना चाहिए बिकॉज इट डील्स विथ मेनी क्लासेस एंड नॉट जस्ट वन. And if you're dealing with many entities in one single file, then you're breaking SRP, which is single responsibility principle. If you're new to the word single responsibility principle, then do check my code like a pro playlist, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, where I'm explaining many good principles on programming. We know the basic rule is class को आप unwanted function का access मत दो if they are not going to use it. But with this database helper, जिसमें बहुत सारी entities हैं, क्लियरली वायोलेट्स दिस बिकॉज मैं किसी भी एंटिटी को किसी भी व्यू कंट्रोलर में एक्सेस कर सकता हूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. एंड दिस पैटर्न हैज द पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ टाइट कपलिंग, जहां क्रिएटिव डेवलपर्स कैन गेट रियली क्रिएटिव एंड क्रिएट अनवांटेड टाइट कपलिंग. प्रॉब्लम यह है कि हम इन सब के बारे में नहीं सोचते हैं एंड आवर गोल इज कि भाई प्रेशर है मैनेजमेंट से तो ईजी वे में कर दो. तो हम ऐसे पैटर्न इंप्लीमेंट कर लेते हैं विच आर ईजी टू इंप्लीमेंट, बट जब प्रोजेक्ट ग्रो होता है तब इट स्टार्ट बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज सच कोड. प्रेशर में आके आप कोड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, विच रियली इज अ वेरी बैड थिंग. एज अ प्रोग्रामर इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक about what code we are adding to the project. Is it quality driven or not? So whenever you see this pattern or you decide to go with such patterns, so you're already breaking some of the coding standards. Now the question comes, what is the right approach then? How about हम एक ही फाइल यूज करते हैं पर एंटिटी. ऐसा करने से हमारा कोड सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा बिकॉज अब एक एंटिटी का सारा कोड सिर्फ एक ही फाइल में एंड इवन टेस्ट केसेस लिखना भी बहुत ही ईजी होगा. और अगर मान लो कोई बग आता है या फिर आपको कुछ डिबग करना है या फिर क्लाइंट ने कुछ चेंजेस करने को कहा है तो यू डोंट हैव टू स्क्रॉल थ्रू अ फाइल ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड. यू कैन जस्ट फोकस ऑन द फाइल दैट मैनेजेस दैट वन सिंगल एंटिटी. बट अगर आपका खुद का पर्सनल प्रेफरेंस है टू यूज डेटाबेस हेल्पर सिंगलटन अप्रोच देन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस
And we know what happens when a developer chooses personal preference over technical reasoning. देखो यार, ऐसा नहीं है कि मुझे सिंगलटन पैटर्न पसंद नहीं है। आई लाइक दैट पैटर्न वेरी मच, बट देन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंगलटन पैटर्न नहीं है। बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर हमेशा एक ही मेडिसिन देता है क्या? नहीं, राइट? आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। Use a design pattern which not only suits the technical need of the module, but also helps you to write maintainable code. Just like in today's demo, we'll be using a design pattern named the repository pattern. First, let's understand few things about why we are using this pattern. Repository is a very simple pattern to begin with, and I am very sure that some of us are even indirectly using this. इस पैटर्न का मेन एजेंडा ये है कि तुम्हारा एप्लीकेशन का डेटा कहाँ से आया, कैसे आया, वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सभी लेयर्स से हिडन रहेंगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस, द मेन एडवांटेज इज क्लीन एब्स्ट्रैक्शन एंड अ डीकपल्ड डिजाइन। वन मोर एडवांटेज इज, अभी तो आपका एप्लीकेशन कोर डेटा यूज कर रहा है, बट लेट से कुछ दिन बाद अगर क्लाइंट आपका बोलता है कि अभी लोकल स्टोरेज मत यूज करो, अभी एपीआई यूज करो, तो आपको सिर्फ एक ही लेयर में कोड चेंजेस करना होगा, विच इज गोइंग टू बी द डेटा रिपोजिटरी लेयर। आपको व्यू कंट्रोलर या किसी और लेयर में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव सीन माय MVVM वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो मैंने वहां भी एक सिमिलर पैटर्न इंप्लीमेंट किया था। वी विल एक्सप्लोर मोर डिटेल्स ऑन द रिपोजिटरी पैटर्न व्हेन वी आर कोडिंग अवर डेमो। दैट बीइंग सेड, वी नो व्हाट CRUD ऑपरेशंस आर, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अवर कोड फ्लो सीक्वेंस डायग्राम। बट उससे भी पहले इट्स टाइम फॉर अनदर कोडकैट 15 एग्जांपल जो हमें कोड फ्लो को समझने में हेल्प करेगा। हर बच्चा किसी ना किसी चीज की जिद करता है, और उसकी जिद को पूरा करते हैं उसके पेरेंट। मान लो किसी बच्चे ने जिद की कि पापा मुझे नए कपड़े चाहिए, तो उसके डैड कपड़ों की दुकान में जाते हैं और शॉपकीपर से बात करके कपड़े खरीद के लेके आते हैं। अब वो कपड़ा कहाँ से आया, उसको किस कंपनी ने बनाया, ये सब इन्फॉर्मेशन से उस बच्चे के डैड को और उस बच्चे को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज टू देम। शॉपकीपर कहीं से भी कपड़े लाए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद दिस एग्जाम्पल इन माइंड, लेट्स हैव अ लुक एट अवर सीक्वेंस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द कोड फ्लो। ये जो सीक्वेंस डायग्राम है, इट शुड बी वेरी फेमिलियर टू व्हाट वी हैव सीन इन द MVVM ट्यूटोरियल। जो जिद्दी बच्चा है वो व्यू कंट्रोलर है, जो हमेशा चीजें मांगते रहता है। इन दिस केस, व्यू कंट्रोलर एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करने की जिद कर रहा है। द मैनेजर ओवर हियर इज द पेरेंट, जिसका एक ही काम है, विच इज बच्चे की इस जिद को पूरा करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मैनेजर इज स्मार्ट इनफ टू परफॉर्म सम अदर ऑपरेशंस। वी विल सी दैट इन द कमिंग सेशन। द एम्प्लॉय डेटा रिपोजिटरी इज अवर शॉपकीपर। जो डेटा कहाँ से ला रहा है, कैसे स्टोर कर रहा है, वो उसका लुकआउट है। जो persistent स्टोरेज क्लास है, उसे हम सिर्फ एक ही लेयर में यूज करेंगे, विच इज द डेटा रिपोजिटरी लेयर। मैनेजर एंड व्यू कंट्रोलर में हम ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे विच एक्सपोजेस कि हम कोर डेटा यूज कर रहे हैं, because then we are breaking abstraction. Mostly I have seen developers breaking this abstraction by doing something like this. Over here you can see जो data repository है वो एक NS manage object return कर रहा है all the way back to the view controller. By returning NS manage object from the data repository, we are exposing to all the layers कि हम core data use कर रहे हैं. And by writing code like this, you have already broken abstraction and you have broken the very first rule of repository pattern. That is, you are sharing a class which belongs to core data framework all the way up to the view controller. इट्स मोर लाइक हम उस बच्चे को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शॉपकीपर ने उस कपड़े को कहाँ से लाया, कैसे लाया, किस कंपनी ने उसको बनाया। उस बच्चे के लिए वो इन्फॉर्मेशन सेंसलेस है। लेट्स से 6 मंथ्स डाउन द लाइन, क्लाइंट ने बोला कि चलो अब एपीआई यूज करते हैं रादर देन लोकल स्टोरेज। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक चेंजेस एट ऑल द प्लेसेस जहाँ पे आपने एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट यूज किया है, विच विल कॉस्ट यू अनवांटेड अमाउंट ऑफ टाइम। बट बाय इम्प्लीमेंटिंग रिपोजिटरी पैटर्न इन द राइट वे, आप ये टाइम बचा सकते हो। So now let's switch to Xcode and perform CRUD operations with core data using the repository pattern. Over here I have the XCData model जिसके पास एक entity है with the name CD employee, and entity कैसे create करना है ये हमने already part 1 में सीखा हुआ है। The CD over here stands for core data, और ये जो naming convention है वो मैं follow करता हूँ just to differentiate between a normal model and a core data model. The CD employee has 4 attributes which are email, ID, name and profile picture. Database में हर record का एक unique identifier होता है। For this demo, we are going to use ID field as our unique identifier, और ID का जो type है it is UUID, and we know that UUID are always unique, but still अगर आपको uniqueness का constraint add करना है, जैसे आप primary की constraint add करते हो SQLite में, ठीक वैसे ही you can add a uniqueness constraint in core data as well. And for that what you have to do is you have to go inside the data model inspector, and over here यहाँ पे आपको constraint दिखेगा. So you have to click on the plus button and you have to edit this, and over here you have to delete this and you have to type ID, and that's it. Just make sure आपके constraint का नाम और आपके attribute का नाम, इन दोनों का नाम same हो. So let us go ahead and create the manage object subclass.
So make sure that आपका जो entity name हो वो same हो and the checkbox over here is selected. And let me drop this guy inside core data support file. मैं सबसे पहले employee data repository का कोड करूंगा and then we will switch to the employee manager. And finally view controller में we will connect everything. So let me switch to the repository over here. यहाँ पे मेरे पास एक protocol है with the name employee repository and the employee repository has some bunch of functions. So I am going to go ahead and implement the employee repository inside my employee data repository. And I'm going to implement the protocol stubs. The create should be very much simple. Create is something which we have already seen in the part 1 of this video. So let us go ahead and do that. Let cd employee is equals to cd employee persistent storage shared context cd employee dot email is going to be employee dot email cd employee dot name is going to be employee dot name id is also going to be dot id employee dot profile picture is equals to employee dot profile picture. And now क्योंकि हमारे entity में एक change हुआ है, what we have to do is persistent storage shared save context. That's it, the create is done. अब आपका एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि why is this create function not returning like at least boolean so that हमें पता चले कि the record is created. Well, to be honest, ये जो save context है इस यहाँ पे एक save function है and this save function is actually void. This save function is not returning me anything, so I'm just respecting what the framework is doing. और इसी वजह से ये जो create function है यहाँ पे it is not returning anything. So now let us move to get all. This is also something which we have seen in the first part of core data. So let us begin coding for this. Do catch let result is equals to persistent storage shared context and we're going to use fetch cd employee dot fetch. The code is exactly the same जो हमने part 1 में किया था. And since we know that result is will actually return a collection of any, as you can see. So what we have to do is a result go we have to convert to an collection of cd employee, and for that we are going to use guard as cd employee else return nil. And over here जो catch है error debug print error. I think now when I look at this code मैं इसे और improve कर सकता हूँ. So let me go ahead and copy this and let me jump to the persistent storage. और यहाँ पे जैसा save context नाम का function है हम लोग एक और function बनाएंगे अपना, that is going to be function fetch managed object. We are going to use generics ns manage object and this is going to accept a parameter of manage object t dot type and this is going to return a optional collection of the manage object. यहाँ पे rather than writing cd employee because this is going to be generic, I'm going to replace it with t dot fetch request, or better you can use manage object dot fetch request, and this is going to be of the type t return result, and over here I am going to return nil. Now let me go back. So यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि all of this can be deleted and you can just say let result is equals to persistent storage shared we'll call it fetched manage object, and this is going to be cd employee dot self, and there you go, the result is cd like a collection of cd employee. तो ये जो function है वो return कर रहा है a collection of employee, and this result over here it is a collection of the cd employee. So what we have to do is we have to write some more code apparently. So this is going to be a collection of employee
We'll initialize this and result for each cd employee. Let me create some space. यहाँ पे employee is equals to cd employee dot name, cd employee dot email, employee dot profile picture, and cd employee dot UUID. And finally, what you can do is you can select employees, append employee. So we are getting an error over here. Let us see what that is. Change let to var for employees. Okay. So यहाँ पे जो employees है, it is a let. Let us change it to var, and that should take care of this error. Perfect. अभी we can go ahead and return employees. I think यहाँ पे ये वाला जो code है for employees, we can also go ahead and change that to an extension of the cd employee. So let us do that function. Let me create some space. Convert to employee. And this is going to return you a single employee. Return. Let me paste the code. ये जो cd employee उसकी जगह पे I'm just going to replace it with self. And now let me go back. और यहाँ पे ये वाला जो code है, I can actually get rid of this entire line. cd employee dot convert to employee. Perfect, much better. We are doing two read operation over here. One is getting all the employee record जिसमें हम कोई filtering नहीं लगा रहे हैं. But in the case of get by identifier, what we need to do is we need to fetch a record based on a particular ID. It's more like we are telling code data कि मुझे एक ऐसा record चाहिए जिसका ID 1 हो या whatever gets passed to this particular parameter. We know that fetch request is something that we use जो हमारे लिए data get करता है. In this case हमें fetch request को ये कहना होगा कि boss data get करो but based on a particular condition. तो एक कंडीशन पास करनी है हमें इन fetch request, and to pass a condition to the fetch request we need to use predicate. So let's quickly go ahead and do that. So let me scroll up a little. So let us create the fetch request first, and to do that let us visit the extension of the manage object and let us copy this line. Let fetch request is equals to paste. That's it. अभी इस fetch request में हमें एक predicate पास करना होगा जहाँ पे हम लोग ये condition specify करेंगे that we need to get the employee where the ID is equals to the ID that is passed over here. So let me create the predicate, and the format is going to be ID is equals to %@ as cvarg. And now इस fetch request को हम लोगों को बताना पड़ेगा कि fetch request you are going to fetch the data based on a predicate, and this is the predicate that you're going to use. Let result is equals to persistent storage shared context fetch request. And क्योंकि ये जो fetch request it is going to throw an exception, you can just use try over here and enclose this in a do try catch. So let me cut this code and paste it over here. Let error, the statement is going to be debug print error. और ये जो result है, this is actually a collection of employee. So what we can do is we can just take the first element and use a guard statement over here which says if result is not equal to nil, else return nil, return result. और हम लोगों ने जो extension बनाया था convert to employee, we are just going to use that, and that's it. Update and delete key functionality will complete in part 2 of this video, which I will be releasing soon this week. If you have any question with regards to what we discussed today, then please feel free to ask them via comment या फिर आप मुझे email कर सकते हो. My email ID is codecat15@gmail.com. Thank you so much for watching this video. If you like this video, then please give a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy coding. Bye bye.